हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका अनफिल्टर रेडियो में। आज मेरे साथ मेरे स्पेशल गेस्ट है उमेश रिंदानी एंड ही इज़ वेरी स्पेशल टू मी, इज़ माय मेंटर और I give him credit for whatever I've learned in my corporate life or managing my finances. Credit goes to him. And because the topic is so dear to me, how to manage your finances, I found none other than Mr. Umesh, who is like an expert in this industry, I would say. To talk about Umesh, by qualification, he's a chartered accountant. That itself says a lot about him. And I was fortunate to work under him in one of the organization where he was the head of revenue accounting, and that was just. I mean, he has headed many organization in a capacity of vice president, head of some finances and all those things. So the more I say about him is less for him. So without any further ado, I really want to welcome Umesh. Thank you so much for giving your time and accepting my invitation to join me on this podcast today. Thank you, Praveen. It is a great pleasure to interact with you. And thank you for the kind words. I also did not realize that I have done so many things. And yes, our relationship is very special. I can't disagree about that, because we have worked on, in different capacities, also different sites. So it's a very unique situation that हमने काम किया है. तो वेल दैट्स इट एंड यस आई एम अ सीए बट बाकी आपके जो व्यूअर्स है उनके लिए बोल दूं कि मैं वो टिपिकल टैक्सेशन वाला के अकाउंटिंग ऑडिट वाला सीए नहीं हूँ. हाँ, तो मैं वो प्रैक्टिस नहीं करता हूँ बिकॉज आई कांट इवन प्रैक्टिसिंग एज अ सीए. Yeah. सो So, Miss, the reason I wanted to have this conversation with you because I think you left corporate life. I don't know for how many years now. I think minimum more than 5 years. You left corporate lives, 20 प्लस years. 20 plus years. But I'm saying that you stopped working for like corporates, and you are on your own And for more than 5 years now. And yes, it is since 2012. 2012, yeah, 2012. So yeah, that's amazing. So you you decided that you wanted to be on your own journey, and you are able to achieve that financial freedom. So I Sorry, really want to, there yeah. there was some delay in between what you spoke got cut. Okay, I'm sorry, let me repeat. My question, my crux of my question is that uh, for anyone to leave a corporate life is a very big decision, because हम लोग का क्या रहता है ना कि monthly salary is so important to manage our EMIs, our finances, education. So many things are there. But in 2012, you decided that you want to give up everything and you want to start your own journey. Um, how did you make that decision? Like, what kind of a planning you did? Like, because without salary to manage expenses and to manage everything, how did you? That's a brave decision you took. So I really want to understand, like, what inspired you to take that decision. The they always say कि hindsight vision is 2020. अभी अगर कोई मुझे बोले, suppose we travel back in time and we are in say 2010 or 12 and say कि भाई Umesh, why don't you give up your job? To be very frank, I will not be able to. So I really don't know from where I got that kind of courage. I was never a bodybuilder. I did not have that kind of muscles. And in our family, both maternal, paternal, nobody had ever been on their own except one of my elder uncles, जिनकी सीए की फर्म थी तभी, और अभी भी है. तो except him, there was nobody as an entrepreneur or solopreneur, as they say. और सीए की प्रैक्टिस में एंटरप्राइजिंग तो है, apart from the uncertainty in getting remuneration, etc.
So, and before I go further, let me tell your viewers, we may be talking slow. So if you want to listen to the video at 1.5, it is fine. I think then it will become entertaining apart from being informative. So coming back to this financial freedom, जब भी मैं, let me go back to my childhood. We used to stay in Mumbai in a very तभी एकदम southernmost area था एक भुलेश्वर करके. I don't know whether you have ever heard of that place name also, but वहाँ पे एक बैंक थी. That bank is now merged with Bank of Baroda, Dena Bank. वहाँ पे मेरा account था as a child. I was 2-3 years young. So every Saturday, my father used to take me to the bank, and he used to give me sometimes 1 rupee, because वो जमाने में, I am talking about late 60s. वो जमाने में 1 rupee note also had a very big value. 1 rupee or 2 rupees, maximum 2, I've seen. तो बैंक के काउंटर पे जाके intention was to deposit that amount to my account. I was barely able to touch the टेबल ऑल्सो. अभी समझो मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ, इतना हाथ. तो सैटरडे मॉर्निंग को अराउंड 10:30 वो क्लार्क पूछेगा, अच्छा उमेश आ गया लगता है, बोलो कितने रुपए लाए हो. एंड आई वाज नॉट एबल टू स्पीक ऑल्सो, बिकॉज मैं तो नीचे हूँ, मेरा हाथ ऊपर जा रहा है ऐसा. तो नाउ इमेजिन, अभी कोई मेरे ख्याल से कोई व्यूअर सीधा कैलकुलेट कर देगा कंपाउंडिंग कितना होगा 1-2 रुपीज का. इट मे रिच crores also, tens of crores also possible, but that was the rule, and I kept on doing that intentionally or unintentionally. Unfortunately, क्या हुआ कि this CA syllabus is such that it is more towards doing. At that time, it used to be, I don't know about this, but it was more towards doing and not actually envisioning or thinking or some sort of enterprise. This is the rule, this is what must be done, this is how it is done, and these are the things. So, and accounting is accounting, of course, it is universal, but सीए ने कभी सिखाया नहीं सिलेबस में कि आपको सेविंग ऐसा करना चाहिए. वो दिस इज हाउ इट जस्ट केम फ्रॉम विद इन. एंड फुल क्रेडिट टू पापा हु taught me this way of saving, because before investing comes saving. uh, and there are many people who say अरे सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है, कुछ नहीं है, पैसा एक बार ये रखना है ना. नहीं, ये जो सेविंग जो कर रहा था मैं, उसकी वजह से आई वॉज एबल टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर, because money is very dear to everyone, irrespective of age or your bank balance or net worth. So saving is something which is essential for everybody. It used to be a big thing 100 years ago. It will be a big thing 100 years from now also, because without saving nobody can go. But मेरा एक ही था, मेरी सैलरी. I will tell you, the first job in airline industry that I had, my salary and my father's salary was the same. I was drawing 40 rupees more than him. And my father was, I think, 6 or 7 years from retirement. So the money that I got in relation to that, what he was getting, was significantly higher, though it was not even 5 digits. Yeah. So that with that, I used to just randomly pick without any knowledge. At that time, mutual fund had just started, and I think now, because I have read somewhere, Arshad Mehta thing started in late, I think early 90s or so. That scam thing and all that. Yeah.
मुझे वो क्या था वो मालूम ही नहीं। तो आई वाज टोटली ऑफ द मार्केट, कैपिटल मार्केट में कुछ मालूम नहीं था। हाँ, आईपीओ कुछ कुछ आते थे ऐसे। तभी वो जमाने में क्या था कि फॉर्म्स होते थे, मैनुअल फॉर्म्स, फाउंटेन में जाके फॉर्म लेके भरो, वो भी नहीं मुझे मालूम था। Some of my colleagues used to do it, during articleship period, but I did not know anything about that. I just kept, and mutual funds when they were introduced, 100 रुपया 500 रुपया जो भी था, I used to just deposit there, and that's how I started. One thing I have, one thing that I must give credit to myself is that I was very disciplined investor or saver. कि ruthlessly I used to deposit almost 60 to 70% of my earnings in some way or the other. दूसरा फादर ने बोला था कि whenever the moment you start earning, in fact he had, at that time money was not that freely available, but उन्होंने सिखाया कि the moment you start earning, open a PPF account apart from PF. तो ऐसा होता था एंड देन आई नेवर नोटिस्ड व्हाट इज द बैलेंस बिकॉज कभी सोचा भी नहीं था एंड देन एज आई प्रोग्रेस्ड इन कॉर्पोरेट लाइफ टाइम मिलना मुश्किल हो गया इन्वेस्टमेंट्स आई डोंट नो व्हाट वाज इन्वेस्टमेंट आई जस्ट केप्ट ऑन डूइंग इट किसी ने एक मुझे बंदा मिल गया था जो फॉर्चुनेटली आई हैड गुड रिलेशनशिप मैनेजर्स फ्रॉम वेरेवर आई हैव डेल्ट विद तो वो बोलता था तो मैं डाल देता था। वन थिंग आई वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट इज कि जहां भी तभी मुझे क्रेज था कि हाउ टू गेट मोर आउट ऑफ लेस। तो मेरी ये सोच थी कि समझो एट दैट टाइम डिविडेंड यूज्ड टू बी वेरी फ्रीक्वेंट इवन इन म्यूचुअल फंड्स, दे वर टैक्स फ्री। तो मुझे ये बंदा फोन करके बोलता है सर ये फला फला फंड में ये स्कीम में डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है 2 रुपए का, चलो डाल दो 10,000 रुपये डाल। तो I never realized that after the dividend is declared, dividend is paid out, the NAV also comes down by 2 rupees. Okay. But because I wanted that, समझो 10 rupees है तो 1,000 units पे 2 रुपया 2,000 रुपया मुझे ले लेता हूँ. But I was what you can say greedy or whatever it is, वो 2,000 आता था वापस वही फंड में डाल देता था. I never took the money out. And this is very important thing that at young age, if you have the habit of doing reinvestment from your income's income, like double income square जो होता है, उसमें से आप invest करो, that is going to have the compounding effect. Because simple money तो इतना level पे नहीं जाएगा, but multiplier effect comes when you keep incrementally increasing your, जो भी है saving investment. तो ये बहुत ही अच्छा किया था मैंने एंड आई केप्ट ऑन डूइंग पीपीएफ इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल दैट। देन आई हैड डेट आल्सो, क्योंकि जैसे डेट देयर वाज नो डेट एक्चुअली बिकॉज़ वी वर स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली, फादर के साथ ही। बट देन व्हेन सम मनी बिकेम अवेलेबल आई डिसाइडेड टू बाय प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। और जब भी मैंने व्हाई आई लेफ्ट दिस जॉब is because I will come to that later. But what happened is that ये जो debt create किया मैंने while buying properties, I kept on ruthless जो मेरा EMI था, तो every month the moment salary comes online जाके create FDs for the next EMI and ऐसा कर करके I ensured that my next 6 months or so I was always having EMI ready.
आएगा सैलरी में से ही जाएगा, बट आई ऑलवेज हैड दैट 6 months बफर, ये कभी भी समझो सैलरी डिले हो गया, देयर वाज नो प्रॉब्लम इन साइड, बट आई जस्ट हैड दैट, अंदर से आ गया कि भाई ऐसा करो, तो कर दिया मैंने। एंड आई केप्ट ऑन डूइंग दैट, एंड वॉट एवर वॉज द बैलेंस, वो थोड़ा बहुत इधर उधर इन्वेस्ट करता ही रहा म्यूचुअल फंड में, नो डायरेक्ट थिंग। So when I actually came into a stage where, when I reached a stage where I had to explain to my CFO what I am doing. Hmm. I am a firm believer that even whatever with whomsoever you speak to, थोड़ा बहुत learning लेके आना चाहिए. And especially if the person is your boss, I should be actually taking some insights from him every time I meet him. Because if I give insights to him, then he will be wondering, okay, what this fellow is doing. So, and that stage came in my life, unfortunately or fortunately. I will say fortunately, because I am what I am today is because of those things only. कि मुझे ज्ञान देना पड़ा कि भाई ये कर रहा हूँ, एंड आई वाज टोल्ड कि भाई अरे यू जस्ट डू इट। सो आई केम टू अ स्टेज वेयर भाई मुझे जो करना है वही करना है, देन व्हाई एम आई रिपोर्टिंग टू द सीएफओ? आइदर आई शुड बी द सीएफओ, और आई शुड ओन दैट कंपनी, और एनी कंपनी फॉर दैट मैटर। एंड जोश था, नॉलेज था, people within the industry were knowing me very well, internationally also thoda bahut dividend kama liya tha. Dividend in the sense ke not money terms, but in terms of people were able to, this is Umesh. So I had that kind of rapport also elsewhere. So I decided कि चला अपने लिए तो एकदम तैयार है सब. And there were many connections. When you are in corporate life, connections तो हो जाता है. तो आई सेड कि ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है, हो जाएगा अपना. एंड आई सेड, एक बार हम लोग मेरी टीम के साथ इधर गए थे टू अटेंड सम कॉन्फ्रेंस. तो इनको बोला अरे ये सब है, चल रहा है, लेट्स स्टार्ट अवर ओन एंड वी विल डू अ ग्रेट जॉब, विदाउट थिंकिंग कि क्या इसका इम्प्लीकेशन रहेगा Hmm. मॉनेटरी या फॉर ऑल ऑफ अस. Everybody said yes, and ultimately I ended up as the only one who was getting out. eh. So I decided, because I had reached a stage where I had to explain to the boss what I am doing. He did not understand. And then he said, कि चलो भाई आप जो भी कर रहे हो ठीक कर रहे हो. And that's when I thought कि incremental knowledge होना चाहिए. When things were very difficult, I exited corporate life. मैं करूँगा. I had full confidence in my abilities and others' ability to help. Uh, what left with me was only my abilities and my confidence, because others next day onwards phone उठाना so people are like that. And I see many people. There is one person, at least whom I know, that fellow has been really struggling, and he has been writing stories about how he can help, and this is on LinkedIn. But unfortunately, he's still writing, because otherwise people will not listen to him. People will not notice him. आज ऐसी situation आ गई है. And then at one stage, I did not have inflow, zero inflow for almost 8 to 9 months. And my EMIs were going on. So, ऐसे situation थी, only EMIs saved me. EMI related deposits saved me. And I had come to a situation where if something would not have happened, I would have been forced to ask my dad, क्या करें अभी? It was my mistake. But ऊपर वाला है ना, सब टेस्ट करता है. क्लाइमैक्स ये हो गया कि मुझे एक ओवरसीज असाइनमेंट मिल गया, and that changed the situation, though it was not for a long time. I mean, I decided
that it will not be a long time because of son's education. तो उसकी वजह से I paid off all my debt. My PF was company's PF in India, whatever was there, I completely used it in repaying the debt, uh, home loans, and whatever money I got from the overseas assignment, that also I used for repaying the debt. And I became a debt-free person at I think 45 or so. That prompted me कि अभी मैं अपना खुद का कर सकता हूँ. And the day I had resigned, I received offer from another country. I don't know how people get this, news. Though it was, I had seen the resignation letter in the CFO's office and in the drawer of the CFO. He told me, I will not release you. And that airline was, that CFO was really great. I mean, I used to enjoy going to his cabin because आपको insights मिलती थी. And that is what one requires. And that is when we came into touch, right? Yeah. If you remember, you were the project manager. So then I said, I like to look at people and see the potential. And there was only one person whom I could talk to freely. And that time you were very new. And you were able to understand, probably you also may have been thinking, ये क्या बोल रहा है बंदा, कितना demanding है. Because people were thinking I am like a torturer. But what I was asking for some basic things only, nothing Yeah. great. But then things changed, and then I started being on my own in professional income आने लगी. And then we switched sides, we worked together, right? And so those things happened until COVID came. And COVID ने पूरा scenario change कर दिया. I was back to where I was in 2011. Zero. सो लाइफ का एक ये है कि आपको व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड जो बोलते हैं, तो वापस मैं उधर ही आ गया. एंड इन्फ्लो स्टॉप्ड. आई वाज क्यूरियस टू विद स्टॉक मार्केट बिकॉज स्टॉक मार्केट में एज अ आई हैव स्टेड विद माय नाना पैटर्नल grandparents for almost 2.5 years because my father was posted overseas. तो उनके साथ when I used to go to college, that this is that phase of life. तभी वो मुझे गुजराती में जो मुंबई समाचार करके पेपर आता था, वहां पे रोज 11 बजे आई यूज्ड टू रीड आउट stock prices, open, high, low, close. That I realized only later on that this is open, high, low, close. I used to just call out the name ACC, Britannia. That thing started hitting me in 2015-16. और मैंने कोर्सेज किए. दे से कि आजकल ये बहुत सुना होगा लोगों ने कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. लेकिन उसका मतलब वो क्या बोल रहे हैं एक्चुअली कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ बाय पेइंग मी एंड एनरिचिंग मी. ऐसे काफी जब भी मैंने ऐसा इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ चालू किया, तो देर वर people who were really good, I would say. And some of them have changed colors, I can see, but फिर भी they are still genuine. So I learned a lot by investing in myself. I invested in lakhs, let me be very frank. And I got the outcome also. Investment, when I was actually doing trading, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ यहाँ पे वो कोई एडवाइस नहीं है, लाइफ एडवाइस हाँ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के लिए कोई एडवाइस नहीं है, क्योंकि मैं सीबी रजिस्टर्ड ही मैं बनना. तो द ओनली थिंग दैट आई विल से इज कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. नाउ यू हैव एवरी सिंगल टूल. कितना भी इन्वेस्ट करो, लेकिन अगर अपने दिमाग को कंट्रोल में नहीं रख पाओगे, तो इट विल बी अ वेरी बैड. बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन लर्न इन लाइफ
is how to control your mind, because this mind is a monkey mind, and only people who are stock market traders or commodity market traders will be able to know कि ये क्या हो रहा है, क्या दिमाग में क्या चल रहा है. And then because of COVID, I became a full-time trader. व्यूअर्स सोच रहे हैं कि भाई ये ट्रेडर है तो बहुत छापा रहे. छापा था, Mm. लेकिन मार्केट ने अभी छाप लिया मेरे से. So I earned in lakhs. I incurred losses much more than that. So, but one thing is there that because of what I said a few minutes since, what I have been saying since the last few minutes is कि because you have invested, because you have kept your things in a separate area, you can do something that it has become my passion. What revenue accounting used to be my passion earlier, it is still now, but अभी तो ऐसे बाल वाले को कौन बुलाएगा, right? Abhi they will call people like you because this is trending. So what I follow is a trend and in investments, and I am happy with that because I don't have to. I get insights every second. I get lessons every second because the moment I make a mistake, ऐसा मुझे बोलती है market, भाई निकल यहाँ से. And that is the biggest thing. And I'm really happy that I did that. I became a stock trader because it has taught me a lot about life. So I want to pause here because if you have any questions. I would like to know, Miss, because you mentioned about mistakes. So अगर किसी को कुछ सीखना है, we learn from others' mistakes. So what are your top 3 mistakes that you can say here, that people can ensure, or people can think, चलो यार ये top 3 mistake हम तो नहीं करें. Something that you would like to advise. Number one is be ready to face the toughest things, even if you have the most comfortable, funding position. अभी आजकल क्या होता है कि people have become very habituated to saying कि money is not important. What you do is more important. मेरे ख्याल से मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे भाई, मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट. ये ज्ञान तभी ही दे सकता हूँ मैं दूसरे को जब भी मेरे पास crores of rupees है. And then I can tell you, or money is not important. It's about what you do in life. You should enjoy your life. लाइफ एंजॉय करने के लिए अपने लाइफ में कम बेसिक नीड्स के लिए मनी चाहिए. विदाउट मनी यू कैन नॉट. एंड another thing about money is that money only brings more money. So most important thing is that you should have at least 2 years savings. The money that you can afford to lose should only be invested because uh, the times have changed. Now people are getting laid off. I keep, reading this Yeah. everywhere. Yeah. And that is not a good sign. I mean, this is all cyclical, but unfortunately, some people may be part of that cycle, So, like how I was. Uh, and then to come out of that cycle, you require money because आजकल कोई पैसा देने वाला नहीं है, इतना कोई generous है भी नहीं. So have enough, more than enough savings in your kitty before you do anything that is going to have financial impact in your life. Second is, if you want to enter stock market or anything similar to that, be ready to accept losses. हमारा जो upbringing है in life is that नौकरी करो, सैलरी लेके आओ, and that's how you do it. We are always living in the comfort zone. I lived in the comfort zone for several years, and that is why I never realized when it hit me also. Unfortunately, क्या हुआ कि because of the things, because of the cushions that I had made, I never realized that
this losses are hitting me. And I had this professional income coming in that was actually going in to fund the losses. Whereas in reality, it should have gone into building wealth. So this is very critical that if you are not able to accept losses in life, whatever kind of loss it may be, it will be very difficult. Train your mind. Third thing important is mind. Learn to control your mind. Use your emotions in the best possible manner that are beneficial to you. एक जैक कैनफील्ड करके बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है. He has written many books also. There was one video which I saw. He mentioned an equation: E plus R is equal to O. Emotions plus, E plus O. Emotions plus response is equal to outcome. Very, very. This has gone into my mind like anything. You get drilled down deep. क्योंकि हमारा जो है वी इंडियंस आर वेरी इमोशनल पीपल. कुछ भी करो कि सीधा ऐसे, अरे ऐसा. एंड अवर माइंड, अभी स्टॉक मार्केट का एग्जांपल, सपोज आई एम लुकिंग एट द चार्ट ऑफ समथिंग, प्राइस गोस अप, बेस्ट, दैट्स एन इमोशनल रिस्पॉन्स. क्या होगा उसके बाद मैं 5% ऊपर गया स्टॉक, एंड आई सेड क्या मिस्टेक कर दिया मैंने, बिकॉज माई रिस्पॉन्स टू द इमोशन वॉज अनचेक्ड. Like you have this unfiltered radio, my emotions go unchecked. I need to keep my emotions in control so that I'm able to use them in the best possible manner that will be beneficial to me and my family and my long term interest. You know, जो भी मेरा vision होगा, I mean, I'm talking for people who are listening to this, if they are listening and watching, but uh, this is for them, that remember, mind is your biggest enemy. Make it your friend. Because जैसे बोलते हैं ना कि in politics there is no friend or foe. लेकिन ये अपना माइंड जो है वो फ्रेंड भी हो सकता है, फो भी हो सकता है, although we are not in politics. So learning is most important in life, but learn to control your mind first. And if you can control that, इसमें क्या बोलें, you have क्या जिंगालाला, life will become जिंगालाला. I तो want to ये है. add a couple of things. These are my personal learning Sure. from my mistakes, and I think अब होता है ना कि आप कोई नया चीज़ स्पेशली रिलेटेड टू शेयर मार्केट आप स्टार्ट करते हो. सो इनिशियली जो भी आते हैं ना, वी आई मीन सबको बोलते हैं कि यू डू पेपर ट्रेडिंग, टेस्ट योर फॉर्मूला, डू पेपर ट्रेडिंग. एंड व्हेन आई यूज्ड टू डू पेपर ट्रेडिंग, माय फॉर्मूला एवरीथिंग, आई यूज्ड टू गेट गुड रिटर्न. लाइक इट्स पेपर ट्रेडिंग. मॉर्निंग में मैंने कुछ कुछ तो उसमें टेक्निकल चार्ट मैंने इंडिकेटर लगाया, शाम तक वो मुझे 10%, 2%, 5% ऐसा रिटर्न मिला. एंड आई डिड इट फॉर लाइक 10 days, 15 days. और मैं बोला हाँ, मेरा जो सक्सेस रेट है दैट्स लाइक 80 to 90%. इट्स अ वेरी गुड सक्सेस रेट जब मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा था. बट द मोमेंट आई पुट माई एक्चुअल मनी, माई रियल मनी, इनिशियली मे बी आई वॉज लकी, आई गॉट अ इट वर्क. एंड फिर मैंने सोचा कि मैं लेवरेज यूज कर लूँ. आपको एक लेवरेज मिलता. फिर मैंने सोचा कि अरे मैं पर्सनल पर्सनल लोन उठा लेता हूँ, जो मुझे 12-13% में मिलेगा. रिटर्न तो मेरा उससे ज़्यादा ही आने वाला है. सो नेट नेट में प्रॉफिट में. द मोमेंट मैं 1 साल में लोन भरता रहा उसका ईएमआई, और लेकिन वो जो मैंने लोन लिया था पर्सनल लोन 1 महीने के अंदर ही पूरा वाइप आउट हो गया मार्केट में. एंड आई रिमेम्बर, एंड आई वॉज इन द ऑफिस. एक तभी उस राजेश एक्सपोर्ट करके एक कंपनी था, इफ यू नो राजेश एक्सपोर्ट. काफी चल रहा था. Yes, yes. एवरी डे उसका 10%, 15% हो रहा था. द मोमेंट आई एंटर राजेश एक्सपोर्ट, दिन वो क्रैश हो गया और मैं ऐसे देखते रह गया बस. मैं मेरा डेस्क से उठा, मैं वॉशरूम गया, मुंह धो के बैठ गया. बोला अभी क्या करे, डूब गया पैसा. सो दैट वाज माय लर्निंग कि अगर आपका आपका खुद का पैसा लगा हुआ, आप मार्केट से ऐसा पर्सनल लोन या
don't borrow Correct. your money. Don't borrow money from bank or for friends. It's a very big mistake. 100%. Yeah. And second learning, which is which I think, as you mentioned about emotions, the mind and the emotion, it is related to that. और अभी मैंने रिसेंटली मैंने एक यूट्यूब पे मैंने एक अच्छा नाइस एक कोट सुना था। रचना रानडे जी का कोट था वो, आई डोंट नो इफ यू नो हर। चीज मुझे अच्छी लगी, उसमें एक बोला था कि शेयर हो, स्टॉक हो या इंसान, लॉन्ग रन में दोनों ऊपर जाते। तो मेरे को That बहुत is अच्छा correct. लगा। हाँ, तो अपना जो होराइजन होता है, जो व्यू रहता है ना, अगर मैं उसको 1 महीने का, 1 साल का लेके चलूँ, यू आर नॉट, आई डोंट थिंक सो वी विल मेक इनफ मनी दैट विल बी इनफ फॉर आवर फ्यूचर। एंड इससे रिलेटेड ही मेरा एक क्वेश्चन है आपको, कि हम लोग जो कन्फ्यूज़ करते हैं कि मेकिंग मनी, गेटिंग लाइक अ क्विक रिच एंड मेकिंग अ वेल्थ, तो इसका जो एक फाइन जो डिफरेंस है, काफ़ी जो नए लोग एंटर करते हैं उनको पता नहीं होता है कि वेल्थ क्रिएशन क्या होता है और पैसा बनाना क्या होता है। दोनों कंफ्यूज कर लेते हैं, वेल्थ क्रिएशन मतलब पैसा बनाना। इस पे आपके क्या विचार है? Yeah, correct. Very, very important point you have brought. See, the thing is, I will say that this is like money is not important. ये या ऐसा point है what you are mentioning. Money is not important only when you have enough money. तो ये जो wealth creation है, people say कि you should become an investor only then you can make money. अब भाई इन्वेस्ट के लिए पैसा किधर से आएगा? हम्म If I am having say, I don't know what the current salary levels are, but I am presuming say in a corporate there may be 200 k INR may be a good salary, comfortable salary मेरे ख्याल से correct possible है वो हम्म या 200 k. So 200 k अगर सैलरी है मेरी और मैं मेरा ईएमआई तो चलता ही होगा 100% which will be I read 2-3 days back किसी का ईएमआई था, वो बोल रहा था कि कुछ घर लिया 1 करोड़ के पास प्लस का एंड ईएमआई वाज 1 लाख. सो इफ आई रिमूव ईएमआई 1 लाख, 2 लाख में से सपोज 2 लाख इज टेक होम तो 1 लाख ही बाकी रह गया, जो भी खर्चा वर्चा रह के मे बी इज हैविंग से 50,000 स्पेयर. 50,000 स्पेयर में से वो इन्वेस्ट करेगा, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो होगा इट विल कंपाउंड स्लोली एंड the only way for an investment to grow, money brings more money, is ये एग्जाम्पल है जो राकेश झुनझुनवाला, यानी ये लोग ने बहुत पैसा बनाया है, करेक्ट, बट दे मेड मनी आउट ऑफ मनी. ऑल ऑफ देम वर ट्रेडर्स अर्लियर. हम्म हम्म Arshad Mehta was also a trader. He was not an investor because maybe he created the bull market, the first bull market of India possibly. But he was a trader जो आज लेके 2-3-4 दिन में. And from that, suppose I invested 1 lakh rupees and I am able to get 3,000 rupees after 1 week. That is 3%, right? 3% in 1 week. You multiplied by 52 weeks. Courses market में ऐसे ही sell होते हैं कि you यस get more than 200% return. यस But वैसा नहीं है. That 3,000 which you got is when you invest that 3,000 or you invest partially, that is when your wealth building starts. You need to have more than one sources of income. ये अभी मैं बोल रहा हूँ कोई फाइनेंशियल प्लानर वगैरह है उसकी you need to have multiple sources of income. Rich dad poor dad में लिखा है कि you should have 7 sources of income. हम्म ये बहुत ही अच्छी बात है ये बोलने, लेकिन मैं आज एक नहीं है तो मैं 7 किधर. या प्रॉब्लम इज दैट व्हाट योर क्वेश्चन इज दैट ओनली कि मेरे पास जो है नहीं, वेल्थ कैसे मैं बनाऊं जब मेरे पास पैसा ही. सो जिसके पास पैसा ही नहीं है वो उसको पहले सेविंग पे, एंड दैट इज यू
take back me. I mean, the first part of this, discussion where that Umesh brought 2 rupees, 3 rupees every Saturday. You start with that. Up, you are actually starting your life with say 50,000 salary. 100 रुपया तो बचाओ महीने में. Try to save. And if you are able to save 100 rupees, I'm sure, be patient. Don't expect miracles to happen. The miracles happen only to people, who put in a lot of efforts and hard work. There is no overnight success. Nothing happens. There is no get rich quick formula except, yes, trading in futures and options. And you will get rich today, and tomorrow and day after, you will be completely down. I'm a living example of that. Let me tell you, the person, you see, the ट्रेडिंग में एक ही है कि आपको मिस्टेक एक्सेप्ट करने की वो एक्सपीरियंस दे देता है मार्केट. सो देर इज नो गेट रिच क्विक फॉर्मूला. ओनली व्हेन यू आर कंटेंट लाइफ में. ये वर्ड बहुत ही अच्छा इंग्लिश डिक्शनरी ने बनाया है कि वन शुड बी कंटेंट विद व्हाट वन इज गेटिंग. आपका सैलरी 1 लाख हो, 3 लाख हो, 5 लाख हो, 10 lakhs हो, your intake is not going to increase. You may go to different types of restaurant and hotels, but the amount, the greater your pay or money that you have, lesser will be your intake. Which nobody will agree possibly, but this is the reality of life. कि जो आपको क्या चाहिए. I will tell you another example. In one of the groups, there was a discussion that, look at Ambani's, Adani's, and they are billionaires. They have become billionaires from nowhere. Well, ऐसी बात ऐसा नहीं बोलते किसी के बारे में. Nowhere से तो कोई नहीं बनता है unless it is inherited. Now we Yeah. also know that Dhirubhai worked hard, right? And Gautam Adani also worked hard to become where he is today. तो किसी ने लिखा कि so and so surname is मिर्जिंदानवी, तो आई विल ऑल्सो बिकम लाइक. तो मैंने भी बोला कि मेरे भी सरनेम है रिंदानवी. आई एम ऑल्सो एंडिंग में थानी, बट आई हैव चोजन पीस एंड हैप्पीनेस ओवर अदर्स. क्योंकि आपका मुझे 2,000 करोड़ मिलेगा तो भी मेरा आई विल नॉट बी एबल टू एंजॉय दैट 2,000 करोड़ because my mind will be focused on how to make 2, 4, 6, 8, right? That is what is happening with these billionaires. They are not able to have conversations like you and me on a Sunday morning for me, Saturday evening for you. That this is what is happening. They will not be able to spend time. The biggest thing that you can get from anyone is their time. None of this will be able to give you time. Time is one of the most critical things. एक मूवी आई थी पहले मेरे ख्याल से इंसेप्शन. I did not understand much about 10, 15 years ago. But now I realize that in that movie, the only currency that one was able to exchange was time. Okay, I have this balance. Take how much this room will cost. Say 20 days. So 20 days from my life get deducted. So time is very important. Money aega, it will happen when you put in the right kind of effort in the right direction. Money will come, and this is as simple as that. अभी हाँ काफी व्यूअर्स ऐसे भी होंगे, एंड आई होप पीपल कम बैक एंड आस्क कि भाई ये तो बोलता रहता है लेकिन ऐसा कैसे होता है. कैसे होता है वो तो इंडिविजुअल केसेस के ऊपर है. इट इज नॉट लाइक दैट. नाउ if I look back at my life, what I was 25, 30 years ago, what I am now today, obviously things have improved, right? And things, my only goal should be that things should keep improving. I should keep improving. If I am better than yesterday in terms of my understanding and in terms of my ability to enjoy life,
It is good. Yeah. Now, दूसरा ये है कि people will say enjoy life. We many times it happens. ये enjoyment is taken as splurging, पैसा खर्च हो. That is not enjoyment. The real enjoyment थोड़ा philosophical है Yeah. क्योंकि I have become more like that in the last few years thanks to trading. कि what you enjoy may not be the same as what others enjoy. What I enjoy, my wife may not be, son may not be able to enjoy. I enjoy sitting in the balcony, looking at the evening sky, cool breeze going on. That is peace and enjoyment for me. Now, the point is, how many of us will be able to do that and accept that this is enjoyment? क्योंकि अगर आप उस लेवल पे पहुंचोगे तभी आपको रियल एहसास होगा कि या इन द रेस ऑफ लाइफ इन द रेस टू मेक मोर मनी आई हैव लॉस्ट दिस ब्यूटीज मैंने यू नो दैट आई हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग कोट्स एंड रीडिंग एंड ऑल दैट सो मैंने कोट लिखा था कि इफ यू आर एबल टू सी द सनराइज द बास्क इन द ग्लोरी ऑफ सन रेज एंड एंजॉय द सनशाइन you are enjoying a happy life. ये बहुत डीप मीनिंग वाला सेंटेंस है Yeah. क्योंकि मुंबई कर जो भी है वो सन रेज तो सब लेते होंगे मॉर्निंग में लेकिन इवनिंग ग्लोरी किसी को नहीं मिलती होगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स देयर इवनिंग ऑफिस ग्लोरी स्टार्ट्स इन द इवनिंग ओनली कॉन कॉल्स एंड मीटिंग्स एंड ऑल दैट आफ्टर 6:30 राइट एवरीवेयर दिस इज अ प्रॉब्लम इन इंडिया not only in Mumbai, but Mumbai because it is what it is Yeah. becoming a problem. तो ये Very true, Miss. एक Yeah. बात है ये कंटिन्यू गो अहेड No, I just wanted to add. I think I remember one quote from you. मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं. Uh, we were at the airport. You remember आपने लैपटॉप ओपन करके आप कुछ टेक्निकल चार्ट्स वार्ट्स मुझे समझा रहे थे. या फ्रैंकफर्ट हाँ, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट. उस टाइम पे आपने एक बात बोली थी जो मेरे माइंड पे वेरी ट्रू. I think the goal, if you are into if you want to get into the share market, your goal should not be that you want to make X number of return, X percentage of return. Your first goal is to protect your capital. That should be the first goal. मेरे माइंड में तो वो छप गया था कि हाँ यार, I mean this is this is a high risk this is a high risk market. एक देखा है तो ये इट्स a sophisticated gambling, but it's a gambling. हमको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है. So as long as I'm able to protect my capital, I should feel happy and relieved. And then as you mentioned, जैसे आपको प्रॉफिट होता है, कीप इन्वेस्टिंग योर प्रॉफिट, एंड देन जो ट्रेड नहीं चलते यू लर्न फ्रॉम इट. यू नो फिर टाइम पे ऐसा होता है कि यू न्यू कि ये डाउन होने वाला है, बट बिकॉज योर इमोशंस. तो काफ़ी एग्जाम्पल है कि मैं वो ट्रेड में मैंने एंट्री ली, मेरा टारगेट था कि आई विल मेक 5% एंड देन आई एग्जिट. अनफॉर्चुनेटली वो डाउन चला गया, 2% डाउन गया. मेरे पास अपॉर्चुनिटी था कि मैं स्टॉप लॉस लगा के मैं एग्जिट ले लूँ, मैंने एग्जिट नहीं लिया. 2 का 5% हुआ, मैं वहाँ पे शॉक में चला गया. 5 का 10% हुआ तो फिर मैंने सोचा अभी 10% हो ही गया है, इससे बुरा क्या होगा, मैं रख ही लेता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए. करेक्ट सो पीपल कम टू बिकम ट्रेडर्स दे बिकम इन्वेस्टर्स दे बिकम इन्वेस्टर्स या. तो इसमें और एक मुझे ऐड करना था, एंड स्पेशली टू यंग पीपल, एंड आई अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, लाइक यू नीड टू हैव मनी टू मेक मनी. And then people who are starting new, they may not have very fancy salaries, like एक अज्यूम करके चलते हैं कि हर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होगा कि जिसको एंट्री पैकेज ही मिल जाए 20 लाख का. कोई अगर बेसिक में स्टार्ट करे करेक्ट नॉन एन इंडस्ट्री वेयर द पैकेज इज नॉट अट्रैक्टिव, बट एटलीस्ट एक जो माइंडसेट, जो मुझे लगता है कि जो लोगों को स्पेशली यंग पीपल हैव टू अडेप्ट टू, लाइक यू हैव एन इनकम,
So you always ensure that you income, then you minus X percentage as investment before you think of spending it anywhere, like before you think of your expenses. So Yes. thumb rule which I like to follow is that minimum 70% you should invest during your early age. If you're in 20 to 30 years is the time frame where you have to invest. Keep investing. Don't worry about whether you have 1,000 rupees or 10,000. Whatever you invest, after it's a power of compounding. It's all game of compounding, you know. And as you mentioned that what what the people who are at the age of 40, what they don't have is time. So their investment, for example, for to gain, let's say they want to make 1 crore, they may have to invest 50,000 a month. Whereas someone who has the age of 20 may have to invest only 2,000 a month to achieve 1 crore Correct. after 20 years. So this is a very basic and important thing which I think people have to understand, especially the young generation need to understand. There are, ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट में लोग इसलिए पैसा लूज करते हैं बिकॉज they do not invest in themselves, understanding what is the market, understanding fundamental, like Hmm. people should Correct. minimum understand what is the power of my 100 rupees note today. I mean, I'm talking about the inflation. People should minimum understand the inflation. What is inflation, you know? And why do I have to build a habit of investment? Because I want to beat Correct. inflation. So if I keep it in saving account, if I keep in FD, whether I'll be able to beat inflation, I may not be able to beat inflation. आई अंडरस्टैंड अपना जो प्रीवियस जनरेशन था उनके लिए मे बी दैट वाज द बेस्ट ऑप्शन, यू नो, वी गो फॉर LIC, वी गो विथ फिक्स डिपॉजिट, वी गो विथ रिकरिंग डिपॉजिट. बट टुडे आई थिंक म्यूचुअल फंड, आई एम अ फैन ऑफ म्यूचुअल फंड बिकॉज आई हैव रियलाइज दैट इक्विटी में आई डू नॉट हैव लक. मेरा लक पर म्यूचुअल फंड में ठीक है. आई वांट बिल्ड दैट पेशेंस एंड it will it will eventually pay you off, you know, if you have that patience of minimum 10 years, 15 years, you'll make, in the long run you'll make decent money. You are absolutely right. And you said it very well actually. कि equity में your thing is not there. You are more comfortable with mutual fund. Why? Because equity movements are transparent. Yeah. You log into your account, you'll be able to see your movement. Every bip will be there. But mutual fund में NAV होता है at the end of the day. Yeah. That clearly shows that that's a very big difference. And in life, you actually opened one more very interesting thing, that in life आप इक्विटी के या इंडेक्स की तरफ निफ्टी क्या मूवमेंट है वो मत देखो, अपनी आज मूवमेंट क्या है. लुक एट इट नेक्स्ट वीकेंड. व्हाट हैव यू गेन्ड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस. पैसा तो आएगा ही. इफ यू आर वर्किंग मनी विल कम. Yeah. व्हेन यू हैव अ पे चेक comfort, money is not a problem, right? Unless you are sitting on a bench or so in your company, तो ही problem है. Otherwise, money will not be a problem. Your problem will be the office, the work. That is, and I can tell that that is a very good problem to have. That if you are under pressure, but people don't realize, these are very good to have problems. Too much of work, boss is very tough. ये 5 साल के बाद मालूम पड़ेगा कि वो टफ बॉस क्या था. Mm. And because of him or her, you have become a better person, executor, decision maker. इक्विटी विप विप हार्ट बीट की तरफ म्यूचुअल फंड होने भी है. And that is a very big lesson that people need to take. That if you are only ready to lose, you come to equity market. If you want to become crores, then better stay with mutual fund because somebody else is doing that work. Now, I am a very big fan of outsourcing. Hmm. So, mutual fund is outsourcing. Equity is doing the work yourself. तो रिस्क क्या है? मेरा खुद का ही एग्जांपल है. आई इनकर लॉसेस इफ आई डू ऑन माय ओन. म्यूचुअल फंड मुझे मालूम है कि मैं उससे ज्यादा कमा सकता हूँ. एंड नाउ आई हैव कम टू अ स्टेज वेयर आई नो दैट आई कैन डू अ मच बेटर जॉब बिकॉज आई हैव सीन हाउ दिस पीपल वर्क.
I have seen from the numbers. I have not worked with them, but I have seen from my own numbers that I can do a much better job. So I'm now working towards that. Because in life एक बात और भी है कि कभी 50 60 तक Hmm. कुछ ऐसा समय अपने लिए निकालो और फैमिली के लिए वेर यू आर एबल टू हैव अ मीनिंगफुल लाइफ. Again, coming back to people who have billions, I'm not saying they don't have life, but meaningful life, you leave behind something which is going to, uh, at least you will not repent कि मैंने कुछ किया नहीं. I may have incurred lakhs of rupees of losses, but at least I don't have that feeling that मैंने try नहीं किया future and options. I'm still doing trading in future and options today, but at a much reduced level because my focus has changed. My focus is I want to enjoy what I am doing. I don't want to make money out of this. And you know that when you enjoy what you do, you are bound to get the desired outcome. बहुत ही and this unfortunately comes only this wisdoms come more easily to traders who have been hit by the market hard. तो ये this is what I feel कि whoever comes wants to come to the stock market, they should first decide कितने 10-15 लाख का लॉस ले सकते हो तो आ जाओ. नहीं ले सकते हो तो as you rightly said, stick to the NAV. You Yes. will always be gaining. There is unlikely to be a loss if you remain a long-term investor. And equity may be, you may be able to build massive wealth if you can keep just investing regardless of the bips that happening. Yeah. And so, Yeah. Yeah, it's a simple thing, stay longer and then in the long run, you'll make money, whether it's equity or mutual fund. I think equity, maybe yeah, we have many. I was recently watching a video like, and thanks to the person grandfather, like he bought MRF at a price of, I don't remember, like no, 730 stock at a price of 130 or yeah, 140 rupees. And I think that person only called to flaunt that, see, I have 730 MRF, you know I yeah, mean, any person would know what you just have to sit on MRF, do nothing. Like today, MRF is more than 100,000. I think 1 lakh के ऊपर है. yeah, Yeah. So ठीक है, कभी कभी आप जो वेल्थ बनाओगे वो आपके काम में नहीं आएगी, लेकिन आपके जो आने वाली जनरेशन है उनके यूज में आ जाएगी. और शेयर मार्केट में जो भी पैसा डाल रहे हो, आपको जरूरत नहीं है कि उसको निकालना ही है, अनलेस देर इज एन लाइक अ वेरी वेरी इमरजेंसी एंड यू नीड दैट मनी. yeah. Very important point you made. Okay, you should not be ideally if you are not dependent on the stock market related income or gains, never to withdraw. या. Very important point because कभी लोग क्या करेंगे, अच्छा चलो 2 लाख आ गया है, चलो एक ये कर लो वो कर लो. Fund that activity from your present earnings, not from your. You should not be disturbing your wealth that is getting accumulated. अभी यस. थोड़ा पेन ले लो, बाद में अच्छा रहेगा वो. यस. Good. See, अपना प्रॉब्लम wisdoms are वही. coming out. हाँ, एंड बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, मतलब एक टाइम पे ऐसा था कि जैसा मुझे मैसेज आया कि सैलरी क्रेडिट हो गई, फर्स्ट थिंग आई यूज्ड टू थिंक कि खर्चा कहाँ करना है मुझे, खर्चा कहाँ करना है, फिर जो बचेगा उसमें मैं इन्वेस्टमेंट करूँ. तो आई थिंक आई हैड अ वेरी रॉन्ग माइंडसेट. इट टुक मी Yes. years to change that mindset or change that habit, but I'm happy, like eventually I was able to. ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, पर वो एक माइंडसेट में अभी हाँ, एक ठहराव आया तो ठहराव इज सही. वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, लाइफ में ठहराव होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली विथ इन्वेस्टमेंट. यू हैव टू हैव दैट डिसिप्लिन, यू हैव टू हैव दैट माइंडसेट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आपको मुझे एक सवाल, आखिरी सवाल मे बी आई वुड लाइक टू आस्क यू. जो हम Sure. लोग काफ़ी सुनते हैं कि, or because of the current market situation, what's happening between the US and the rest of the world and India and the war and other stuff. और हम लोग बोलते हैं कि India has a very great growth story, but
I don't necessarily agree. I mean, India does have a growth story, but I don't agree India has a great growth story, because if I compare with our neighboring country, China, I think they have seen the tremendous growth. Tremendous growth. मतलब they got a same in this the same duration जो पिछले 60 साल में जो चाइना ने जो इंडिया ने करके दी. आई थिंक आपको क्या लगता है कि according to you, do you think India has a great growth story? I I think we still have a very very long way. Your question is important. I will use stock market and personal जो भी है as individuals, you know. तो फर्स्ट इज स्टॉक मार्केट के साथ अगर कंपेयर करें तो द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड अ लोअर सर्किट in stock market was in March 2020. I think it was 8th or 6th or 7th of March. ऐसा कुछ था. Market cracked 20%. And at one stage it went to Nifty reading of 8,000. Today Nifty is 25,700 plus. We are 5.5 years away from what happened. Nifty has grown 3 times. So, and India has also grown from what it was. So, opportunities, and that is where you said ना कि इक्विटी में नहीं हो रहा है मेरा, लेकिन म्यूचुअल फंड में हो रहा है. आई हैव सीन पीपल were saying at that time कि मेरा फार्मा जो का था उसमें 40% रिटर्न है, पैसा निकल दिया मैंने. अभी if you go to Nifty Pharma chart in April 20, where it was and where it is today, you will be wondering मैं क्या किया. So never believe in the short-term power of anything. Believe in the long-term power, because wealth is built only long-term and not short-term. Short-term gains are made, and which help the finance minister, because they are able to gain more taxes. तो हम लोग के लिए बेस्ट थिंग इज टू रिमेन लॉन्ग टर्म फोकस्ड. इंडिया स्टोरी, टू बी वेरी फ्रैंक, आई डोंट लुक एट दैट, बिकॉज मुझे ओवर दिस इज एवरीथिंग इज साइक्लिकल. दैट्स व्हाट आई बिलीव. आवर लाइफ इज अप्स एंड डाउन्स आर cyclical. Today, India may be what India was in 2020 and what India is in 2025. There is definitely significant improvement. But as you said, there will be a stage where stock market में बोलेंगे ये डबल टॉप बोलते या saturation point आ जाएगा. So there will be another term used in stock market is healthy correction. कि भाव 26,000 नहीं जा रहा है, निफ्टी जाके फिर नीचे आ रहा है. So those things will keep happening. But eventually, Nifty will reach 50,000. When, we don't know. I will tell you one real life incident. When Nifty in July or August of 2020, I think Nifty was at 10,000. Somebody known to me told me, I have told my clients, exit from all portfolios because of price earning ratio. This is fundamental analysis. मुझे I don't follow fundamental analysis. I only follow price technical analysis. मेरे हिसाब से तो all looks good. भाव ऊपर नीचे जाएगा. So he told everyone to get out at 10, 10 and a half or so. Today we are at 25.7. So आपका reading आप कहाँ पे हो, that is more important. Today, if everybody starts buying gold, and imagine there is a 10% to 20% correction, which is possible. What will happen? You are, and this is why knowledge is more important. Knowledge is power, it is said.
So when to invest, timing is of great significance. When you enter the market, इंडिया में आलू समझो 100 रुपीज 150 रुपीज a kg होगा तो that will not sustain for a long time. It will eventually come down. So today gold is at 1.5 to 2 lakh rupees. Will it be possible for people to keep buying gold? No. Believe me, they say many things like central banks have bought this, that, US, China. मुझे वो सब समझ में नहीं आता है. That my son understands better because my thinking is totally different. ये demand और supply के पर है. I was approached by somebody कि you give your portfolio to me, I will manage and I will diversify into gold portfolio. तभी gold had reached its highest level just about 8-10 days ago. मैंने बोला देखो मेरे ख्याल से गोल्ड कल गिरने वाला है. आई जस्ट लगा हाँ, गिरने वाला है. इट सो हैपेंड दैट इट फेल द नेक्स्ट डे एंड द पर्सन सेड हाउ यू केम टू नो. आई सेड मुझे कोई बोला नहीं है. आप मुझे कोई मैं कोई एनालिसिस नहीं करता हूँ. लेकिन इफ समथिंग विच गोज अप कीप इट कैनॉट कीप गोइंग अप linear. It will have its ups and downs. When there is a dip, when to buy is the most important thing that one needs to learn. तो यही एडवाइस है कि यूट्यूब वीडियोस अच्छी बात है. हमारा वीडियो भी ये यूट्यूब पर ही आएगा. बट वी आर नॉट गिविंग एनी एडवाइस बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड. बट उतनी तो फ्रेंडली एडवाइस दे सकते हैं कि यूट्यूब पे जो आता है उसको ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिएगा. बिकॉज देर आर मेनी पीपल whom I have been told that who are making money out of these videos and clicks and have become billionaires. तो मैं तो यही बोलता हूँ कि वीडियो देखो यूट्यूब, लेकिन ध्यान में रहे कि इट हेल्प्स यू टू मेक मनी और बिकम अ बेटर पर्सन रादर देन दैट पर्सन बिकमिंग मोर वेल्दियर, यू नो, बिकॉज दैट इज हिज एम, दैट इज हिज लाइवलीहुड, नो डाउट अबाउट इट. बट वेरी वेल सेड। और उसके ऊपर मैं एक आखिरी बात करना चाहूँगा। हमें आपने जो बोला श्योर, यूट्यूब और सोशल मीडिया पे जितने भी वीडियोस आते हैं, और आजकल तो शॉर्ट्स का ज़माना है, नो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, 10 सेकंड 20 सेकंड में। और जितने भी इन्फ्लुएंसर है वो करोड़ों के नीचे बात करते ही नहीं है, वो आपको करोड़पति बनाना चाहते हैं। तो मेरा एक ही रहेगा कि अपने व्यूवर्स को कि बी द बायर, डोंट बी द प्रोडक्ट। you are right, absolutely right, because buyer is the king, customer is the king. हाँ, तो दे आर यूजिंग यू एज अ 100%. प्रोडक्ट, दे आर सेलिंग ड्रीम्स। और वो सिर्फ सपने में ही पूरे होते हैं, हकीकत कुछ और ही होती है। हकीकत हकीकत में में नहीं. हकीकत में होता नहीं है। यू हैव टू बी वाइज। एंड मैंने काफ़ी सारे ऐसे देखे सिनारियो जहाँ पे लोगों ने, बिकॉज दे ट्रस्टेड देयर फ्रेंड्स और समवन हु रिकमेंडेड, दे जस्ट फॉलो ब्लाइंडली एंड दे एंडेड अप लूजिंग मनी। या, You're right. मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस Yes. है। Correct. I am seeing your face. You are able to see my face. What they sell is this. या, Life is what you have. या, It's not a bed of roses. It's full of thorns. फुल ऑफ थॉर्न्स। लेकिन वो it is unavoidable, या, right? It is unavoidable, and one must go through the grind to realize because you have in everything that we do. एक ही बात समझ में होनी चाहिए. I must be a better person today than what I was yesterday. Knowledge, money छोड़ दो, money automate आएगा. Money is a mutual fund, right? It will keep coming long term view पे. If you improve yourself today than what you were yesterday, या, life is जिंगा लगा. एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच उमेश। आई थिंक काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका एक्सपीरियंस और Same here. ये स्टोरीज सब आपने जो शेयर किए आज, थैंक यू सो मच। और हमारे जो भी व्यूअर है, आई होप उनको भी अच्छा लगे। एंड आपने जैसे बिगनिंग ऑफ द वीडियो कहा था कि इसको 1.25 के स्पीड पे प्ले करो, आप एंजॉय करोगे।
Yeah. One more advice, totally unrelated to finance, is one thing that changed my thinking, thought process, life is reading. Reading is very important. And I started reading with trading related books in 2018, 19 or so. But now I have moved over. I don't read those books. I read more about psychology, सिज्म एंड ऑल दैट लेकिन ये जो है वही आपको एक अच्छा इंसान बनाएगी बिकॉज लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं है Yeah. जो आप खुद हो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ in learning and reading these things and now everything is available on YouTube and on the internet, not YouTube. There are ways in which you can buy books without incurring. I'm sure viewers are more intelligent than me, but this is what I am saying. एंड अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो मैं मेरी बुक प्रमोट नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैंने भी 2-3 बुक लिखी है 2 बुक लिखी है और ये अमेजोन पे है बट अगेन दैट आई रोट बिकॉज आई वांटेड टू शेयर समथिंग वो उसका सेलिंग हो या ना हो अलग बात है इट हैज No, Umesh, बिकम please अ tell गुड the थिंग फॉर मी title of your books. the title of the book is inspired by again a legendary trader. My book's title is The Reminiscence of an Accidental CA. And second book title is I think How to Read Nifty and Bank Nifty. So उसमें मैंने first book में it is a recount of who I was, my journey to become a CA, not after becoming a CA. I thought of reading after becoming a CA, writing after becoming a CA, but then many people will get into discomfort, so I skipped that. Instead, the video is a better thing because I like videos. Uh, Creating content is more important. Very true. So, Umesh, thank you so much for joining me today, and I would like to see you again. We will come up with Sure. another very interesting topic for Yeah, our yeah, yeah, audiences. yeah, sure. And I wish you all the best. Whatever you are doing today. Thank Thank you you. again. Thank you so much. Thank you, and good luck to you, Pranay.